जितने भी लड़के बोलते हैं कि ना क्यों प्यार कर रहे हैं, क्या दिक्कत क्या है जी आपको, यार ठीक है तेरी माँ किससे प्यार करे, ठीक है ना, तेरी माँ किसी से घूमे फिरे लफंटरबाजी करे, ठीक है ना, है हाउ डेयर यू से दैट, तो गुस्सा आ जाएगा आपको। आपकी बहन किसी के साथ घूमे तो है हाउ डेयर यू से दैट, तो मतलब आपकी माँ और बहन किसी के साथ घूमे तो गलत है। लड़की ही बेचारी नुकसान में रहती है। अगर वो बेचारी गर्भवती हुई, कौन संभालेगा बच्चे को, यहाँ तो गर्भपात कराएगी, वो हिंसा करेगी, बच्चे की जान लेगी अपने ही बच्चे की, यहाँ पे बच्चा पालेगी तो अब बाप तो है नहीं, क्योंकि तो बॉयफ्रेंड वाला चक्कर था, ये आगे तो बढ़ लिया। ये तो लिव इन का, ये तो कुत्ते बिल्ली होते हैं गलियों में घूम रहे हैं, ये लिव इन में होते हैं असल में। साथ में कुछ समय रहे, बच्चा पैदा हुआ, फिर कुत्ते ने किसी और कुत्ते को चुना, कुत्ते ने किसी और कुत्ते को चुना, ये तो कुत्ते बिल्लियों का कल्चर है बाबा। तो इसीलिए ये कोई प्यार मोहब्बत वाला ये जो केस है, ये कोई एडवांस कल्चर नहीं है, हमें से कोई पसंद नहीं करेगा, हमारी माँ और बहनें इसमें लगे। हम की 16,108 पत्नियां हैं, भगवान ने लिव इन किसी के साथ नहीं किया, जिम्मेदारी के साथ 16,108 पत्नियों को 16,108 रूपों में 16,108 महलों में भगवान ने रखा। Again, I mean no disrespect to any religious figure, any spiritual figure, any organizational head. When I make these videos, I'm making them for the purpose of more harmony, more conversation, more understanding and more dialogue. So one of my clients sent me this video and said that her mother had given this to her as a birthday gift when her mother had visited her home for her birthday, as a way to say, like, I'm so disappointed in you for not being married, I'm so disappointed in you for being in a live-in relationship. And the mother is a very religious person who follows one of these leaders' work really closely. I'm really glad more engineers are turning into monks, more monks are writing books, more people from different fields are like getting into other professions than just their profession, which was not very common for Indians to do, and we are doing that today, which is like really beautiful and endearing. However, my question is कि ये skills transfer क्यों नहीं हो रही है? Why are we not transferring the knowledge we have in one field to another field, not just like stepping into another field, but also learning to be more open to what that field is giving us? So I understand when people are in like small bubbles and they have never interacted with other human beings, they have never thought about social issues. But what about people who are now stepping into these large public roles and are speaking to the public and are influencing public opinion? हम थोड़ा fight कम करके थोड़ी pointed बातें कर सकते हैं क्या? और ये न्यूज़ एंकर स्टाइल डिबेट को छोड़कर क्या हम बस और पॉडकास्ट स्टाइल को छोड़कर क्या हम बस बैठ कर बात कर सकते हैं एक दूसरे से कि हमें क्या चाहिए एज अ विजन, एज अ सोसाइटी, एज अ फ्यूचर, हमें क्या चाहिए? सो सम ऑफ द थिंग्स ये जो लीडर कह रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप बिल्कुल लफंटरबाजी, आई थिंक द वर्ड ही यूज, बिल्कुल लफंटरबाजी नहीं होती है. Yeah, there are many people who are irresponsible about their relationships, right? But that's not everybody. And it is not in the structure, design of live-in relationship that it is bound to fail, right? A live-in relationship is an experiment into seeing, like, are we compatible enough to share our life together? Many live-in relationships do turn into marriage. Many relationships do not, because you can't get married if you're queer in India yet. But in other ways, shapes or forms, बहुत सारे लोग बिल्कुल violent नहीं होते live-in relationships में, बहुत सारे लोग होते हैं. तो उस स्ट्रक्चर को ही त्यागने से अच्छा क्या हम सपोर्ट सिस्टम्स के बारे में बात कर सकते हैं? क्या हम गहराई में इन चीजों को देख सकते हैं? As a spiritually focused person myself, I have been through so many disciplines. I have been through so many different organizations, and including the one that Sir is a part of. And I really have been left always feeling that there are very less teachers who think deeply about social problems. Many teachers tend to become very shaming about anyone who doesn't think like them. This is true for political leaders, this is also true for religious leaders.
And I'm just desiring more conversation that doesn't come from a space of arrogance or putting somebody down, but of really understanding what the core issue is that someone is talking about. How do you think this can happen on a large scale?